Good evening, dear students. Today we are going to discuss about some problems based on motional EMF. As we know that in unit 4, that means electromagnetic induction and AC, EMI and AC, we are having a large number of questions based on motional EMF, and in CBSE exam, in board exam, it's very important topic and many times the question has been asked from it. So I have just taken few questions of that portion and tried to solve them, and solution of these questions will help you in understanding how these questions can be solved. So here in first question it has been asked that a jet plane is traveling westward. It is moving along west direction. So I have just write it like this, that from it is moving from east to west. Okay, plane is moving from east towards west direction. Okay, and when it is moving, the wings of this plane will just क्या करेंगे बेटा जी यहाँ पे वो they will just cut the vertical component of earth magnetic field. This V is the vertical component of earth magnetic field. So यहाँ पर आप तो इसलिए यहाँ पर जो vertical component of earth magnetic field है उसको ये जो plane मूव कर रहा है इसके जो wings हैं वो कट करते हुए निकलेंगे. So here we know that the vertical component, और आपको दिया क्या क्या है वो भी देख लीजिए क्वेश्चन के अंदर. आपको बोला गया है that plane is traveling westward at a speed of 1800 km per hour, and what is the potential difference developed between the ends of a wing, and the length of the wing is 25 meter long, and earth magnetic field given to you at that particular location is 5 × 10⁻⁴ Tesla, and angle of dip is 30 degrees. So it's mentioned in your question. So how to solve it? Initially beta ji, first what will you do? We will just write down that whatever given to you in the question, सबसे पहले आप वही लिखेंगे, ठीक है. So here फिर उसको करने का मेथड हमारे पास में क्वेश्चन में गिवन था बेटा जी कि हमारे पास में जो प्लेन है दैट इज मूविंग वेस्टवर्ड डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ 1800 km per hour. So when it move along the direction from east to west, it will basically cut the vertical component of earth magnetic field, and as it will cut the earth magnetic field, so we will say that here the induced EMF जो होगा आपके पास में E जो होगा that will be equal to, we noted E is equal to BLV, but here E is equal to VLV. This V is the vertical component of earth magnetic field. Okay, we know that this V is equal to B sin delta, and this delta is angle of dip. Okay, so here it is the given portion. The question was V is equal to velocity of the plane is equal to 1800 km per hour. Okay, 1800 km per hour. First we will convert. Always remember to convert anything in terms of their SI unit. So here it will be 1800 km per hour. That means 1800 into 5/18. 18 बन जाए 18 और ये कट जाएगा बेटा 100 आ जाएगा ऊपर. तो 100 into 5 becomes 500 meter per second. So here the velocity of this plane is 500 meter per second. Angle of dip is 30 degree. Length of the wing is 25 meters. Given here that the length of the wing is 25 meters. So and the earth magnetic field given to you is 5 × 10⁻⁴ Tesla. So here we will just I have just written whatever given in the question. Now beta we know that induced EMF is given by the formula again, E is equal to BLV. Here V is equal to magnetic field is equal to V. So E is equal to VLV. This small v is for velocity, L for the length, and this capital V for the vertical component of Earth's magnetic field. So here E is equal to, we will have VLV, and this V is equal to whatever V here is B sin delta. BE means Earth magnetic field into sin delta. ओके, सबस्टिट्यूट द वैल्यूज हियर. BE कितना है बेटा? BE है हमारे पास 5 × 10⁻⁴ माइनस 5 × 10⁻⁴. साइन डेल्टा इज एंगल ऑफ डिप दैट इज 30 डिग्री हियर. सो हियर इट विल बी 5 × 10⁻⁴ साइन 30 इंटू लेंथ हेयर इज 25 मीटर. सो 25 इंटू वेलोसिटी इज 500, जैसे हमने अभी पहले निकाला था ऊपर 500 मीटर पर सेकेंड, इसको यहाँ पे आपने सब्सटीट्यूट कर दिया. सो हेयर आई विल गेट दैट E इज इक्वल टू, हमारे पास आ जाएगा बेटा E इज इक्वल टू 5 × 10⁻⁴ into sin 30. We know that sin 30 is half, so half into 25 into 500 becomes 12500, and then when we solve it, it becomes 3.125 volt. It's your answer. So here we have just find out the EMF induced in the wing of the jet plane when it is moving westwards. ठीक है. Now let's solve another
problem based on motional EMF. And here now in the second problem, it is given to you in the question. It has been asked that a wheel with 8 metallic spokes, each 50 centimeter long, is rotated with a speed of 120 revolution per minute. Okay, beta, here 120 revolution per minute is given to you, and here this the omega is making angle of what? It is this जो wheel है आपके पास में, the wheel is in a plane, moving in a plane normal to the horizontal component of Earth magnetic field. So basically the direction of motion of the wheel and the horizontal component of magnetic field is basically perpendicular to each other. Okay, now that simply means that the motion of the wheel will cut the horizontal component this time. Okay, so here and in the question it's given to you that the Earth magnetic field at the plane is 0.4 Gauss. But a Gauss is the CGS unit of magnetic field. Okay, and whenever any other unit is given to you except SI unit or except MKS, then it's our duty to convert that unit into MKS unit. Okay, so here the magnetic field given to you is 0.4 Gauss. Angle of dip given to you is 60 degree, and you have to find out the EMF induced between the axle and the rim of the wheel. बेटा here we are having rim और बीच में हमारे पास axle होता है और ये हमारे पास spokes हैं. Okay, so here and it has been asked further that how will the EMF be affected if the number of spokes were increased. Always remember that there will be no change in induced EMF. There will be no change in induced EMF when we consider the case of spokes, because induced EMF is always independent of number of spokes. Okay, so now let's try to solve this question. Here सबसे पहले जो given है आपको वो लिखेंगे बेटा जी. Earth magnetic field given to you BE is equal to 0.4 Gauss, so it can be written as 0.4 into 10⁻⁻⁴ Tesla. Angle of dip is 60 degree. Okay, and the length of the spoke गिवन है बेटा क्वेश्चन में, दैट इज स्पोक कितना सेंटीमीटर का, 50 सेंटीमीटर का है आपके पास में. आपने वो लिखा दैट एल इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर. देन 50 सेंटीमीटर कन्वर्ट दिस सेंटीमीटर इनटू मीटर, इट विल बी 0.5 मीटर. ओके, इट विल बी 0.5 मीटर. देन व्हाट विल बी डू हियर, ओमेगा बेटा हियर इट इज गिवन दैट इट इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 120 रेवोल्यूशन पर मिनट. Okay, so we will convert this revolution per minute into radian per second. Okay, so for this purpose we know that omega is equal to how much? Omega is equal to 2 pi nu. Okay, and 2 pi nu given to you is 120 revolutions per minute. That means 120 by 60 revolution per second हो जाएगा. So finally we will get omega is equal to 4 pi radian per second. Okay, now beta, as we have to find out the induced EMF in a rod of length L, और वी कैन से स्पोक की बात करें, बीच में एक्सेल है, साइड में रिम आपके पास में, तो इसका लेंथ हमने इस लेंथ को हमने L ले लिया फ्रॉम हेयर टू हेयर. सो दिस आपके पास में इंड्यूस्ड EMF का फॉर्मूला होता है हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा. ओके, इट इज़ हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा. नाउ बी आपको पता है बी मैग्नेटिक फील्ड होता है बेटा जी, एल लेंथ ऑफ रॉड होता है, रॉड या स्पोक जो भी आप कह रहे हैं, एंड ओमेगा हमारे पास में एंगुलर स्पीड होता है. सो व्हेन वी पुट द वैल्यू हेयर वी विल गेट दैट बी जो है आपके पास में, डैट इज द, यहाँ पे क्या होगा बेटा, डैट इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, डैट इज इक्वल टू एच. ओके, और इट कैन बी रिटन एज एच इज इक्वल टू बी ई कॉस डेल्टा. एच कैन बी रिटन एज एच इज इक्वल टू बी ई कॉस डेल्टा. सो ई इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा हमारे पास में, ई आ जाएगा, ई इज इक्वल टू हाफ बी ई कॉस डेल्टा एल स्क्वायर ओमेगा, बिकॉज हेयर यहाँ पे बी जो है वो एच के इक्वल है, और एच किसके इक्वल है बेटा, बी ई कॉस डेल्टा के. सो ये हमारे पास में एच की वैल्यू यानी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी है. सो हेयर आई एम हैविंग द वैल्यू हाफ इंटू बी ई कितना था बेटा, बी हमने अभी इसको गॉश को कन्वर्ट किया टेस्ला में, डेट वाज 0.4 × 10⁻⁴. देखो यहाँ पे हमने कन्वर्ट किया था इसको हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया. सो इट इज़ हाफ इंटू 0.4 × 10⁻⁴ इंटू कॉस डेल्टा. डेल्टा हेयर इज 60 डिग्री. ओके, इट इज गिवन टू यू हेयर, डेल्टा इज 60 डिग्री बेटा क्वेश्चन में गिवन था, तो cos 60 into 0.5 स्क्वायर, बिकॉज लेंथ इज 50 सेंटीमीटर, दैट इज 0.5 मीटर, तो ये हो गया हमारे पास 0.5 स्क्वायर इंटू ओमेगा वॉज 4 पाई. Substitute the values of pi here and when we simplify it will have half into 0.4 become 0.2 into 10⁻⁴ as it is. cos 60 होता है आपके पास half into 0.5 स्क्वायर मीन्स 0.25 into 4 into pi का वैल्यू होता है 3.14. सिंप्लीफाई किया देन आई एम गेटिंग द वैल्यू 3.14 into 10⁻⁵ वोल्ट.
it is induced EMF, the unit will be volt. Don't forget to write the unit of the physical quantity whichever you are going to find out, just because जो unit होता है उसका half marks होता है आपके बोर्ड के पेपर में. Okay, so here induced EMF जो आपके पास find out हुआ बेटा, that is 3.14 into 10⁻⁵ volt. ओके, एंड एज आई टोल्ड यू इनिशियली दैट ई जो होता है आपके पास इंड्यूस EMF जो होता है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ नंबर ऑफ स्पोक्स. ओके, ये नंबर ऑफ स्पोक्स पर डिपेंड ही नहीं करता. दैट्स वाई जो आपके पास में इंड्यूस EMF की वैल्यू रहेगी पूरे व्हील के लिए वो सेम ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी, चाहे नंबर ऑफ स्पोक्स आप कम कर दें चाहे नंबर ऑफ स्पोक्स ज़्यादा कर दें, इट विल रिमेन सेम. ओके, so here we have done 2 problems based on motion EMF. In further video we will sort out more problems based on this unit. Okay, till then go through these questions and try to solve more questions, and if you have any query then you can ask me.